तो पहली न्यूज़ है ये, हेल्थ मिनिस्टर अप्रूव न्यू ट्रीटमेंट regime for multi drug resistance TB, ठीक है। The Union Health Minister on Friday approved introduction of new treatment regime for multi drug resistant tuberculosis in India. The BPALM regime consists of 4 drugs: budaculin, pretomanid, linezolid, लाइनज़ोलिड, ठीक है, और एक है मोक्सीफ्लोक्सिन, has proven to be safe, more effective and quicker treatment option than previous MDR TB treatment procedure। तो ये याद रखने, BPLM में 4 ड्रग कौन कौन से हैं। फिर it added that the country was working toward the elimination of TB by 2025, 5 years ahead of the global target to eliminate the disease under the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इंटरनेशनल तो हम तो 2030 तक कर रहे हैं, पर हम 2025 तक का टारगेट रखे हैं। द मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस BAPLM regime, a novel treatment for MDR TB, multi drug resistant TB, under its national TB elimination program, और इसकी हाई सक्सेसिव रेट है। दिस regime include a anti drug pretomanid in combination with bedaquiline and linezolid, ठीक है। तो इन सब की बात कर रहा है कि हम इन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। फिर है प्रीटोमैनिड हैज अर्लियर बीन अप्रूव्ड एंड लाइसेंस फॉर यूज इन इंडिया बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब तो हटा दो, बस ये 4 याद रखनी है। While the traditional treatment lasts up to 20 months with severe side effect, the BPALM regime can cure drug resistant TB in 6 months। तो याद रखना ये जस्ट 6 मंथ में ठीक कर देगा, और पुराने वाले करते थे कितने से 20 मंथ में, और उसके साइड इफेक्ट भी होते थे। इंडिया 75,000 ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट विल बी नाउ एबल टू बेनिफिट। तो ये सब है, पर ये सबको हटा दो, 75,000 को बस ये याद रखना है, 6 महीने में करता है ठीक। तो ये है, इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी सेफ एंड मोर इफेक्टिव एंड क्विकर ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। फिर इट ब्रिंग डाउन द टाइम अराउंड 6 मंथ फ्रॉम अर्लियर, ये याद रखना है। इट हैज़ बीन फाउंड चीपर फ्रॉम बोथ हेल्थ सिस्टम एंड, ये सब तो ठीक है। और इसमें जो ये हैं, ये बस ड्रग का नाम याद रख लेना है। फेक न्यूज़ है ये, क्वाड लीडर शेड्यूल टू मीट इन यूएस ऑन September 21। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी to host the leaders of US, Japan, Australia ahead of UN meeting, venue yet to decide. Summit could be held in Delaware और न्यूयॉर्क। तो ये बताया सोर्स से। फिर न्यू दिल्ली will miss its turn to host Quad Summit in India this year. Source confirmed, as leader of US, Australia, Japan, and India will meet in the USA instead at special summit ahead the UN meeting। तो सीधी बात है, ये यूएस में मिल रहे हैं इस बार, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल हैव कंफर्म पार्टिसिपेशन इन समिट इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो अल्बनीज, टू hosted by the Prime Minister Narendra Modi on September 21 when he travels to New York ahead of UN Summit of the Future, द यूएन जनरल असेंबली एंड द डायस्पोरा इवेंट, ठीक है। तो यूएन की सबमिट होगी, उससे पहले यहाँ पे जाएंगे यूएस में, वहाँ पे ये होगी क्वेड। However, diplomatic source said a final decision on the venue is awaited as number of different possibilities were being discussed and the summit could be held in New York or even in Rehoboth Beach in Delaware। तो 2 जगह पे हो सकती है। Delaware venue was an option under the consideration, while others said the choice of venue is still unclear, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, भी कुछ पता नहीं है। अब एजेंडा क्या है इसका? ऑफिशियल है preparing an agenda for Quad Summit, which was discussed during the meeting of the 4 foreign ministers in Japan in July 29, including the maritime security, critical emerging technology, cyber security, humanitarian assistance, disaster relief, health security, climate change, counterterrorism, infrastructure, and connectivity, addressing the debt crisis through sustainable, transparent, fair lending and financing practice। तो ये सब की बात कर रहे हैं वो, कि इस पे बात कर सकते हैं।
फिर एक न्यूज़ है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट नॉट द प्रोगेटिव prerogative of single individual. Supreme Court. The Supreme Court held on Friday that the process of judicial appointment to constitutional court in the country is not a just chief justice प्रोरेगेटिव्स एंड मस्ट बी कंसल्टेटिव। तो कह रहे हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस का इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सबकी सहमति होनी चाहिए, कंसल्टेटिव होनी चाहिए। द अपेक्स कोर्ट सेड द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट followed since it was brought into effect in 1993 was the Supreme Court itself was the collaborative and participatory process involving all members of the collegium, which include the senior most judges of the court. The process of judicial appointment to a superior court is not prerogative of the single individual, underlying the principle that the process of appointment of judges must be reflect the collective wisdom that drew from the diverse perspective. A bench of Justice Harikesh Roy and P.K. Mishra observed. The judgment is based on the petition filed by the two senior most judicial officer on their proposed elevation as the judges of the Himachal High Pradesh Court. ठीक है? The case revealed that the Chief Justice of High Court chose to individually address the Supreme Court Collegium on the sustainability of the two judicial officers without keeping High Court Collegium colleague in the loop. The Chief Justice of High Court cannot individually consider the recommendation, and it can only done by the higher court collegium acting collectively, the court held. तो वो ये कि भाई अकेले नहीं करना है, ये अपॉइंटमेंट हुई है ऑफिसर की, इसमें भी तुमको वो कॉलेजियम थी उसकी सुनना था कि उनकी क्या एडवाइस है, क्या वो अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो सब है। फिर न्यूज़ है कि एनटीसीए लेटर ऑन द रिलोकेशन फ्रॉम टाइगर जोन ड्रॉ आयरे। तो अपेक्स टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आस्क 19 स्टेट टू prioritize रिमूवल ऑफ रेजिडेंट फ्रॉम कोर टाइगर जोन, सीनियर एनवायरनमेंट ऑफिसर से। तो उन्होंने कहा है कि कोर जो जोन है वहाँ से इनको निकालो रेसिडेंट को। तो रिसेंट लेटर बाय द एनटीसीए द अपेक्स बॉडी टास्क विद द टाइगर कंजर्वेशन आस्किंग 19 स्टेट टू prioritize द रिमूवल ऑफ विलेजर who are resident in the core tiger zone draw and has drawn the ire of the several organizations and activities who have been written to union minister। ठीक है? फिर it has been observed that 591 villagers comprising 64,000 families are still residing in the core area and tiger zones. The progress of the progress of the village relocation is very slow and it poses grave concern in the light of tiger conservation। तो कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं और दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है? तो ये सब है। फिर कह रहे हैं कि similar letters have been sent to other states too. Karnataka has 81 villages in the core zone, with the 1175 families having been relocated since the inception of the Project Tiger in 1973। तो ये सब है कि वहाँ पे अभी भी रहने को दिक्कत है। इम्पोर्टेंट क्या है? तो कोर जोन refers to the portion in the tiger reserve where the tribal cannot live and activities such as hunting, collecting for फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज बैंड। तो ये जहाँ पे रह नहीं सकते हैं कोर जोन को कहते हैं, और वहाँ पे क्या है, ये सब बैन है। देयर इज अ concentric circle outside the core zone called buffer zone where these restrictions are eased but regulated। पर इसके बाहर जो कोर जोन के बाहर एक और सर्किल होता है उसको कहते हैं बफर जोन। वहाँ पे क्या है, ये एक्टिविटीज परमिट है पर फिर भी रेगुलेटेड फॉर्म में है, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कर रहे हो। ठीक है? देयर आर 53 टाइगर रिजर्व इन इंडिया अक्रॉस 19 स्टेट। ठीक है? तो 53 टाइगर with 848 village comprising 89,808 families। तो 53 टाइगर रिजर्व में 19 स्टेट में, जिनमें 848 विलेज हैं और जिनमें 89,000 लोग रह रहे हैं सिंस 1973। अब ये सब है, इतने लोग रह रहे हैं। वी आर अपील्ड at the step taken by NTCA directing the relocation of the forest dependent communities in the flagrant violation of all relevant laws। रीड बाय द लेटर। तो सीधी बात है कि कह रहे हैं कि इनको निकाला नहीं तो वॉयलेशन हो गया, ये सब है।
तो वो चाहते हैं इनको निकालो, ठीक है। फिर the letter alleged that the NTCA relocation order were in complete violation of the Wildlife Protection Act, the Forest Right Act, and the right to fair compensation and the Transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act. The NTC action plan put pressure on the state government to relocate communities, forcing the state government to commit illegalities. This would lead to massive conflict between state authorities and scheduled tribe and other forest-dwelling tribes living in the tiger reserve, the letter added. तो ये कह रहा है कि भाई ये इस हिसाब से फोर्स कर रहे हैं कि उसके हिसाब से कुछ दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि उनके भी अलग अलग लॉ हैं ये जो मैंने पढ़े तो वहाँ पे भी दिक्कत है इसलिए इम्पोर्टेंट तो एक इसको सही से सेटल किया जाए तो कोर जोन न्यूज़ में आ गया बफर जोन न्यूज़ में आ गई एनटीसी न्यूज़ में आ गई फिर एक न्यूज़ है पीएम मीट्स टीचर्स pitches for the education in mother tongue. The Prime Minister Narendra Modi on Friday interacted with teachers who have been conferred the National Teacher Award and they spoke to them about the importance of getting education in mother tongue. तो वही सब है फिर इसके बाद NEP से impact डिस्कस किया है he discussed the impact of national education policy and spoke about the significance of mother tongue in education he suggested the teacher can teach the local folklore to students in different languages so the children can learn multiple language and get exposure to vibrant culture of India. The teacher can take their student on educational tour to explore India's diversity, which will aid their learning and also help them to get know about the country's holistic manner. He said he added that this will boost the tourism and will give fill up in the local economy as well. He suggested that the awardees should connect through the social media and share their best practice so that everyone can learn and adopt the benefit. The National Teacher Award are given to celebrate the honor the unique contribution of the some of the finest teacher in the country. For the award this year, 82 teachers from across country were selected and include 50 teachers selected by the Department of School Education and Literacy, 16 by the Department of Higher Education and 16 teachers by the Ministry of Skill Development. तो इन सब ने मिलके चूज करा है ये अब न्यूज़ है 17 स्टूडेंट किल इन फायर एट केन्या स्कूल डॉर्मिटरी तो फायर इन स्कूल डॉर्मिटरी in Kenya killed 17 students and seriously burned 13, police said on Friday. There is a fear that the death toll may be rise. With the cause of the fire Thursday night at the hillside and primary in जो भी है investigative पुलिस spokesperson ठीक है तो ये सब है यहाँ पे आग लग गई बच्चे मर गए तो ये कह रहे हैं नियरी कंट्री कमिश्नर पीयूष मुरुगू and education minister reported that the dormitory was that caught fire housed more than 150 boys aged between 10 and 14. Since most of the buildings are built with the wooden plank, the fire spread very fast. The school, which has 8, 824 students, is located in the country's central highland, 20 kilometers north of the capital Nairobi, where the wooden structures are common. The governor, Neri County Governor Muthai Khagai, जो भी है Muthai Kaiga, told press person that the rescue efforts were hampered by the muddy roads caused by ongoing ठीक है तो यहाँ पे आग लग गई सीधी बात है school fire are the common in Kenya boarding school often due to erosion fueled by the drug abuse and the overcrowding according to recent ministry report. फिर एक न्यूज़ है ये यूके slams Google for anti-competitive practice in EdTech तो Google was slammed Friday by the UK regulator who say it is taking advantage of its dominance in digital advertising to thwart competition in Britain. तो ये सब की बात कर रहे हैं कि ये इसकी जो पावर डोमिनेंस है उसका गलत यूज़ कर रहे हैं ठीक है फिर ये कह रहा है ब्रिटेन्स Competition and Market Authority said that the US company gave preference to its own service to deter
मीन टू डिटरमिनेंट ऑफ द ऑनलाइन पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर्स इन ब्रिटेन। तो ये सब है, कह रहे खुद के उनको प्रियोरिटी देता है, ये प्रायोरिटी, ठीक है। तो यही सब है, तो इसके ऊपर चल रही है, अभी कैसा कुछ बड़ा है नहीं।